Hello, everyone. Welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So, today we have got the following content of list to discuss. So, let's start. The first topic says about urgent need for reform in UN Council. तो बहुत दिनों से ये बात चल रहा है कि we need an urgent reformation in the UN Security Councils, which is today held by the P5 nations. Okay, ये P5 में कौन कौन आता है? USA, UK, France. Then we have got China, and we have got Russia. So in this category, where the UNSC has got some of the extraordinary powers in the UN, today, after the world turned into multipolarity, we want the change around this UN Security Councils. Because aside from these members being the permanent, there are non-permanent members, that are the 10 members. Okay, so this non-permanent members directly renews its term, but not the permanent ones. So see, this UN Security Council was one of the main 6 organs of the United Nations and was established during the World War era. And the organization gives some of the excessive powers to these 5 permanent members. And however, the realities of the time are completely incomparable to the present. आज मैं अगर 1945 के बारे में बोलूं, so from 1945 of on 2022 is like जमीन आसमान का फर्क. Okay, and there is long-standing acknowledgement of the need to expand the UNSC, both in permanent and non-permanent membership. तो यहाँ पे India, alongside these 4 countries, that is the G4 countries, this countries directly aspires to directly become a part of this UNSC. Okay, so therefore the countermates, that is the S. Jaishankar Sahab, our external affairs minister, so he along with his counterparts directly met in a forum where you can see that in the BRICS meeting. So the G4 banner, that is Germany, Brazil, Japan, as well as India. Okay, so the group is primarily focused on UN Security Council reform and permanent membership for the G4 members. Okay, so G4 is a group of countries that are seeking permanent membership. Africa needs to be represented in both the permanent as well as non-permanent categories, so that today if you see in this African continent, we do not have got any member directly under the P5 category. Okay, so in Europe, generally Russia comes under the Europe only. Okay, so in Europe we have got 2 continents, 2 countries directly going for this UNSC seat. In Asia, being the largest continent of the world, we have got only 1 representation. South America does not have got any representation. So therefore we needs to expand over here. तो यहाँ पे वही सब बोला गया है कि Africa needs to be represented in both the permanent categories as well as non-permanent categories of the UNSC to correct the historical injustice against this continent with regards to its underrepresentation in the Security Council. And it is demanded to make UNSC more effective and representative to increase the number of permanent from 5 to 11 and non-permanent from 10 to 14. ओके, जहां पे लैटिन अमेरिका घुस जाएंगे, जहां पे साउथ अमेरिकन का थोड़ा अंडर डेवलप स्टेज घुस जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे वी आर डायरेक्टली फोकसिंग ऑन टू इंक्रीज बोथ द मेंबरशिप, बी द परमानेंट बी द नॉन परमानेंट वंस. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन सी दैट इंडियाज मेंबरशिप टुडे, बिकॉज इंडिया वी हैव सीन दैट in this UNSC, India has served many times in this non-permanent membership. Supposedly till around 2021, we can see India has served around 7 times. Okay, and in this 2022, when India is directly a permanent, is a non-permanent member, India entered the UNSC 8th time. Okay, so therefore India's contribution is very much. Today we can see that India took parts in the formation of various number of this Universal Declaration of the Human Rights. Okay, India played its part in formulating decisions on several issues, be it the deadly conflicts of the Middle East, be it the maintaining peace in Africa, sending some of the UN peacekeeping force. Also, India contribute extensively to the UN, particularly for the maintenance of international peace and security. मैं अगर पीस कीपिंग मिशंस के बारे में ही बोलूं खाली, तो वहां पे इंडिया ने आज तक 43 बार they have sent their regiments with some around 1,60,000 troops, and also a significant number of police personnel are deployed in this UN peacekeeping force. Okay, एक टाइम में इंडिया क्या था? टॉप लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर था. आज आ गया कम से कम 5-6 में आ गया अभी. ठीक है, सो देयरफॉर इंडियाज डिमांड फॉर अ परमानेंट सीट इन द यूएनएससी इज कंप्लीटली रैशनल. As today we are the 5th largest economy, we have got a territorial size, we are being going to the highest population by the next year. Okay, also we have got a civilizational legacy, cultural diversity है हम लोग का, political system है, also various contributions to the UN है.
तो देयरफॉर हम लोग का जितना भी यहाँ पे डिमांड है वो सब क्या है, जायज है। ओके, सो यहाँ पे इन्हीं लोग के द्वारा यहाँ पे मीटिंग करके इन G4 कंट्रीज ने क्या किया, दे डायरेक्टली टॉक्ड अबाउट that how we can be a part of this UNSC, how we can be a part of this expansion of the UNSC. Okay, so it is very much indispensable to reform the Security Council through an expansion in the permanent and non-permanent chain. कल अगर बोल दे कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग एक्सपांशन करना चाहते हैं अपने यूएनएससी, परमानेंट पाइप बोल दे, P5 वाले कंट्रीज बोल दे, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी वेरी मच इंडिस्पेंसिबल कि इंडिया और इन दिस G3 कंट्री जितने भी है, इंडिया एज वेल एज दिस अदर कंट्रीज, ओके, ब्राजील, देन वी हैव गॉट जर्मनी, देन वी हैव गॉट साउथ अफ्रीका। सो अगर इन लोग को छोड़ दिया जाए, ठीक है, सॉरी नॉट साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जापान एंड जर्मनी, ठीक है, तो अगर इन लोग को छोड़ दिया जाए इंडिया के साथ, देन ऑब्वियसली इट विल बी अ रॉन्ग थिंग दैट हैज बीन डन बाय दिस यूएनएससी, ठीक है। सो देयरफॉर इंडिया नीड्स टू लेवरेज इट्स रोल, okay, in this UNSC, and in the coming times India needs to revitalize its engagement with its traditional partner in the whole context of UNSC's permanent shield. Okay, so therefore ये यहाँ पे वही सब डिस्कस किया जा रहा था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ईरान अनरेस्ट। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है, ठीक है। रिसेंटली देयर हैज बीन अ प्रोटेस्ट, ओके, क्योंकि एक यहाँ पे जो लेडी है, ओके, 22-year लेडी महसा अमीनी, ओके, सो शी डाइड, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्रुटलिटी ऑफ द पुलिस फोर्सेस ओवर देयर। तो यहाँ पे भी ये जो पुलिस फोर्सेस है, ये इन लोग का मॉरलिटी पुलिस बोला जाता है, ठीक है, मॉरलिटी पुलिस, और इट कैन बी टोल्ड एज इवन अ गाइडेंस पुलिस। मैं बताता हूँ इन लोग के वर्ड्स में क्या बोलते हैं, गाइडेंस पुलिस बोला जाता है इनको, ठीक है। सो दिस प्रोटेस्ट एरप्टेड इन ईरान, यू कैन देख सकते हो यहाँ पे, प्रोटेस्ट एरप्टेड इन ईरान आफ्टर दिस Mahsa Amini, a 22-year-old woman, was allegedly killed in police custody after she was held for not covering her head properly. ओके, तो यहाँ पे ये लोग का जो हिजाब का इशू है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राइट फ्रॉम दिस इस्लामिक रिवॉल्यूशन अराउंड 1970 जब शुरू हुआ था, तो यहाँ पे इस्लामिक टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, एंड देयर हैज बीन क्रिएटेड अ फोर्स व्हिच कुड ओनली लुक आफ्टर द एलिमेंट्स ऑफ वुमेन वेयरिंग प्रॉपरली ए हिजाब, ओके। तो यहाँ पे उन लोग का बस चले तो ये लोग तो बुरखा भी पहना देंगे, लेकिन अगर मान लो अगर बुरखा नहीं पहन रहे हो तो एटलीस्ट हिजाब तो पहनो। और हिजाब में क्या होता है, देयर आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ दिस थिंग्स, कवरिंग्स, ओके, देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो दिस यू कैन थिंक, ओके। तो खिमार क्या होता है, इट कवर्स हेड एंड नेक, तो यहाँ पे हेड और नेक कवर करना होता है। बुरखा ये टोटल पूरा कवर हो जाता है। निकाब क्या है, कवर्स फेस शोइंग ओनली द आईज, बस आप देख सकते हैं, ये हिजाब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एक तरफा भी वी कैन नॉट सी द हेयर कमिंग आउट, ओके, यहाँ पे थोड़ा भी हेयर नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर हेयर दिख जाए, हेयर दिख जाए कहीं पे, तो दे विल बी इम्प्रिजन, ये लोग को उठा के लेके जा सकता है, ठीक है, दैट मॉरलिटी पुलिस। और ये क्या होता है, ये चादर होता है, ठीक है, फुल्ली बॉडी क्लोक रिवीलिंग आईज और फेस, ओके, तो ये ऐसा टाइप का ये चादर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था, तो ये देख सकते हो, दिस इज द लेडी दैट इज महासा अमीनी, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो इन लोग का, इनका जो बाल है ये निकला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इट इज अथॉरिटी, यहाँ पे बाल निकला हुआ है इनका। तो इसी के चलते क्या हो गया था, इसी के चलते वी कैन सी दैट दिस पुलिस फोर्सेस, ओके, जिसको बोलते हैं गश्त ए अरसद, ओके, whose job is to ensure that women in Iran wear clothes as maintained by Iranian law. तो ये लोग देखते रहते हैं कि कहाँ पे वुमेन क्या पहनता है, कहाँ पे वुमेन बुरका पहन के निकल रही है नहीं। तो ऑल दिस थिंग्स आर बीन लुक्ड आफ्टर बाय दिस गश्त, उसको बोलते हैं हम लोग गाइडेंस पेट्रोल, ओके, गाइडेंस पेट्रोल, ओके। तो ऐसा टाइप का एक पुलिस फोर्स है वहां पे। तो इन्होंने इनको उठा के एट्रोसिटीज किया, इनको पूछा गया। तो सोच लो कि ये थोड़ा थोड़ा लाइक लिबरल माइंडसेट की टाइप की औरत होगी, ठीक है। सो देयरफॉर फॉर दिस वेरी रीजन इवन नाउ वी कैन सी सच नंबर ऑफ प्रोटेस्ट इज डायरेक्टली गोइंग ऑन, ठीक है, एंड इवन वेरियस नंबर ऑफ पीपल्स directly surrendered the hijab, okay, and we can see that today even I have seen some of the videos where women in Iran began cutting their hair and burning hijabs as a mark of protest, okay, बाल काट रहे ये लोग, ठीक है। तो दिस वुमेन्स वांट्स टू टेक द हिजाब अवे फ्रॉम देयर लाइव्स, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे अभी ये कंट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू हो गया, हो सकता है इन द रिसेंट टाइम पीरियड्स यहाँ पे टत्ता पलट हो सकता है, टत्ता पलट मतलब कू हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट टोटल यहाँ पे कोलैप्स कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू, ठीक है। और एक यहाँ पे एक इशू, एक वीडियो ऐसा भी आया था जहाँ पे एक चलता फिरता हुआ एक आदमी
जस्ट बिकॉज अ वीमेन वाज नॉट वेयरिंग प्रॉपरली अ हिजाब, तो उनको जाकर थप्पड़ मार दिया था। तो लोगों ने उसको ब्रूटली मार मार के उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा हजारों में अरेस्ट हो रहा है। ठीक है, लोग डर है, कम से कम 21 लोग मर गए हैं यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट। तो ये चल रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर कंडीशंस टुडे, दिस hijab protests are directly in news and the whole world leaders are totally silent today because of this issue. ठीक है, लेकिन आज इंडिया में होता तो ये लोग बाहर से कमेंट कर देते। ओके, इवन यू कैन सी अबाउट द ओआईसी। ओके, ओआईसी यहाँ पे बहुत चुप है। ओके, बिकॉज द पुलिस टुडे आर डायरेक्टली किलिंग देयर ओन सिटीजंस, ओन पीपल, लेकिन फिर भी यहाँ पे सब ऑर्गेनाइजेशन, सब कोऑपरेशन चुप है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इंडिया होता तो आज तो पूरा हंगामा हो जाता। ठीक है, तो दैट इज जियोपॉलिटिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स कि हिजाब लॉज अदर इस्लामिक नेशंस में कहाँ कहाँ, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर। ठीक है, तो ये लोग जब पीडीएफ मिल जाएगा देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कार्बन डेटिंग फॉर ज्ञान पापी मॉक्स। ओके, सो व्हेन आई गो फॉर कार्बन डेटिंग, तो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे अलाउ कर दिया। ठीक है, जो कार्बन डेटिंग होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे द इलाहाबाद हाई कोर्ट डायरेक्टली सेड दैट जो कार्बन डेटिंग है ज्ञान पापी मॉस का, वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये कार्बन डेटिंग होता क्या है? तो कार्बन डेटिंग इज बेसिकली is a radiocarbon, okay, and is a method of age determination that depends upon the decay to nitrogen of radiocarbon. Okay, तो वो होता है कार्बन डेटिंग एंड इज अ वाइडली यूज्ड मेथड अप्लाइड टू एस्टैब्लिश द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, बिकॉज लिविंग थिंग्स हैव गॉट कार्बन इन देम वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, एंड द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर इज कार्बन 12। तो यहाँ पे कार्बन डेटिंग के बेसिस पे क्या होता है, ये सॉरी ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था एक अमेरिकन साइकिस्ट ने, उनका नाम है विलियर्ड विलियर्ड एफ लीबी, LIBBY। तो इन्होंने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? अराउंड 1946। ठीक है, एंड कार्बन 14 is continually formed in the nature by the interaction of nutrients with nitrogen in the earth's atmosphere. Okay, so today if you see about the radiocarbon dating, ठीक है, तो ये क्या है radiocarbon dating? This radiocarbon is very much present in molecules of atmosphere carbon dioxide and enters into the biological carbon cycle. It is then absorbed from the air by green plants and then passed on to the animals through food chain. Okay, and this radiocarbon decays slowly in living organisms, and the amount lost is continuously replenished as long the organism takes air or food. And once the organism dies, however, it ceases to absorb carbon 14 so that the amount of radiocarbon in its tissue steadily decreases. Okay, तो ये वाला बात बोला गया है यहाँ पे कि लाइक हाउ वी कैन डायरेक्टली इंटरप्रेट द एज ऑफ अ रेस्पेक्टिव एरा। तो यहाँ पे बोला गया कि कार्बन 14 के हिसाब से हाफ लाइफ क्या होता है? 5730 ईयर्स। ओके, वो प्लस माइनस 40 ईयर्स कुछ हो सकता है। तो कार्बन 14 का हाफ लाइफ कितना है? मतलब इतना साल पुराना है। दैट इज हाफ द अमाउंट ऑफ द रेडियोस्कोप प्रेजेंट at the time of undergoing this disintegration. Okay, so therefore today this radiocarbons or this carbon dating is directly proved to be a very versatile technique of dating fossils and archaeological specimens from 500 to 50,000 years old. And this method today is very much widely used by geologists, anthropologists, archaeologists, and investigators in various number of related fields. ठीक है, तो यहाँ पे वही सब यहाँ पे क्या बोला गया है कि लाइक दिस कार्बन डेटिंग ऑफ दिस ज्ञान पपी मॉक्स इज वेरी मच अलाउड। और अभी यहाँ पे ज्ञान पपी मॉक्स में जो शिवलिंग मिला गया है, ठीक है, तो हिंदू जो इसको शिवलिंग बोलते हैं, तो द कोर्ट इशूड नोटिस टू अदर पार्टीज वांटिंग टू नो वेदर दे हैव एनी ऑब्जेक्शंस टू द कार्बन डेटिंग और नॉट। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन डेटिंग वाला इशू यहाँ पे रेज किया गया। ठीक है, तो हाई कोर्ट के द्वारा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। बर्निंग फ्यूल टू कैरी फ्यूल। तो यहाँ पे क्या है? वी कैन सी दैट अभी यहाँ पे हम लोग का जो इथानॉल ब्लेंडिंग चल रहा है, ठीक है, सो इंडियाज इथानॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल हैज सोर्ड फ्रॉम 38 करोड़ लीटर्स टू एन एस्टिमेटेड 450 करोड़ लीटर्स and achieving 20% blending by 2025-26 project and 1016 करोड़ लीटर्स by नीति आयोग। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है? ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल हम लोग जो बना रहे हैं, ठीक है, दिस ऑल्टरनेटिव फ्यूल इज वेरी मच posing a challenge in respective to transporting, because today if you see that currently the entire quantity of ethanol is being transported by either road or truck tankers. Okay, and carrying around 1016 crore liters would require around 3.5 lakh tankers. Okay, at an average of 29 kilometers capacity. And not only is this costly, but it will amount to burning fuel to move fuel and result in some of the greenhouse gas emissions. तो इसी के चलते क्या हो रहा है? इसी के चलते इंडिया एक चैलेंज फेस कर रहा है कि हम लोग तो बोल दिया है कि हम लोग इथानॉल ट्रांसपोर्ट करेंगे, इथानॉल हम लोग ब्लेंड करेंगे, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह तक लाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग को पहुंचाने के लिए, इट द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली फेसिंग चैलेंज।
ठीक है, तो अभी हम लोग का दूसरा उपाय ढूंढा जा रहा है कि हम लोग ये ट्रक्स ना यूज करके हम लोग पाइप्स का यूज सकते हैं क्या, पाइपलाइंस का यूज कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो हम लोग अगर डेडिकेटेड पाइपलाइंस लगा दें ओनली फॉर इथेनॉल टू ट्रांसपोर्ट दिस इथेनॉल प्रैक्टिसेस, देन ऑब्वियसली वी कैन सी दैट दिस मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइंस फॉर मूवमेंट ऑफ डीजल, गैसोलीन एंड इथेनॉल, ओके, ये सब हम लोग का बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ऑन दिस विल आल्सो कंट्रोल द रिलीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड बाय द production of the pollution because of the trucks as well as various number of movement of the machineries. Okay, so therefore today the government is directly planning that they should directly shift their respective attitude towards transporting ethanol either by the roads or tankers, and instead of them we can use the pipelines, some of the dedicated pipelines only to carry such number of fuel. ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा इतना कुछ डिटेल्स नहीं दिया गया है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो वैल्यूज है, ओके, कि हम लोग का कितना इथानॉल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग कितना राइज किए हैं, तो वो दो तीन वैल्यूज यहाँ पे इन फर्स्ट पैराग्राफ मिल सकता है, तो वो दो तीन देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। रिन्यूइंग आवर सिटीज। तो व्हेन आई से अबाउट रिन्यूइंग आवर सिटीज, तो इट डायरेक्टली सेज दैट कैसे हम लोग अपने सिटीज को, दैट इज अर्बन सेंटर्स को, we can directly renew and to directly make it very much available for the climate change, very much for migration. ठीक है, तो see, if I say about this country of India, India has been amongst the most fastest growing economies in the world, okay, and aspire to be among the top 3 largest economies in the world by around 2047. तो आज हम लोग पांचवें इकोनॉमी में हैं, तो हम लोग का एम है कि हम लोग थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे कब तक, 2047। ओके, एंड 2047 किस लिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज डायरेक्टली द 100th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, 100 साल हो जाएगा हम लोग का इंडिपेंडेंस का। सो इन दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इट्स सिटीज हैव अ मेजर रोल टू प्ले, एंड सिटीज आर इंडियाज व्हाट, इकोनॉमिक पावर हाउसेस, and is a magnet for large rural population seeking a better life. Because in the recent few years, a number of schemes have been launched specifically for the development of the cities and the urban dwellers. Because, however, with reference to the efforts made for developing cities, the results have been very much dismal. And the major causes for the same can be attributed to poor planning, infrastructural shortcomings, and the plight of urban local bodies, that may be some form of notified town area committees, or maybe some of the municipalities. Okay, so today, if I say about the urban development of India, the contribution of urban development of India. So the cities constitute around about 3% of the country's land, but they contribute to more than 70% of the gross domestic product. Okay, so today, if I see about the National Commission on Population, it estimated that India's population is expected to increase to around 1.211 million to around 1.518 million during the period of 2011 to 2036. And that is a growth rate of around 73%. तो देख सकते हो in the coming times which are the areas, or we can say in the coming times what will be the condition of people living in the urban areas. Okay, so आज हम लोग का majority of the areas are rural areas, urbanized इतना areas नहीं है, कितना है 20-30% of the areas are directly urbanized, लेकिन यूएन ने प्रोजेक्ट किया है कि बाय 2050 तक हम लोग का 50% एरिया अर्बनाइज हो जाएगा। And therefore, the government is directly planning various number of schemes: Smart Cities Mission, Amrut Mission, okay, Hriday Mission, then Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, Slum Dwellers Program, Pradhan Mantri Galib Kalyan Yojana, Atmanirbhar Bharat Abhiyan. तो ये सब क्या है? It is directly some of the programs given to the urban cities, urban areas, not the rural areas. तो आज हम लोग का challenges क्या है development of the cities के लिए? We can see there are various number of challenges. Okay, because if we see in the cities, we have got air pollution, we have got urban flooding, we have got droughts. Okay, फिर land use decisions थोड़ा बहुत है हम लोग का, land disruptions हो रहा है हम लोग को. Okay, and we can see various number of classifications of urban areas, which leads to the formation of a divide between the urban and the rural. तो ये सब challenge है, इसको खत्म करना पड़ेगा. Okay, then also various number of unplanned development of statutory towns, unplanned cities. Okay, so unplanned various number of regulations. So जितने भी regulations होता है वो unplanned होता है, झट से बना दिया जाता है. Okay, also the urban local bodies are not so independent to take their own decisions. Financial conditions उन लोग का इतना strong नहीं है. Okay, urban transport, that is also very much less. Okay, urban transport, even in the night time, you cannot find a good number of vehicles directly plying on the loads. Urban transport, even during the daytime, we cannot see good number of trains, good number of local trains, good number of metros in every cities.
तो हम लोग का चैलेंज बहुत है, लेकिन विथ एन इंटीग्रेशन फॉर इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट and rethinking the approach for a city development and overcoming the planning and infrastructural shortcomings. Also, making use of the startups as well as technology blending. And also, with the involvement of the citizenry, the government can directly make a area directly in prospect status. So today, cities experience constant evolution, and they are not just the drivers of the economical growth, but are directly the magnets of global knowledge exchanges and playground for innovations. However, to enable them to fulfill their purpose, it is very much important to reshape the planning of the cities, which is also inclusive of the components of such land use, housing, transportation, healthcare, etc. तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है कि कैसे हम लोग अपना सिटीज को रिन्यू कर सकते हैं, कुछ डाटास दिया गया, किस पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग पुश कर सकते हैं, एंड किस बेसिस पे हम लोग इसको अफोर्डेबल बना सकते हैं फॉर एवरी पीपल डायरेक्टली माइग्रेटिंग फ्रॉम अ रूरल एरिया टुवर्ड्स द अर्बन एरिया फॉर वेरियस प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है अबाउट सम ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिन्यू आवर सिटीज। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो वी कैन हैव द 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ये अटेम्प्ट कर लेना। ओके, एमसीक्यूज, the answers of these MCQs you will directly get in your Telegram channel. So we have got a new WhatsApp channel for us, so do join us in the WhatsApp channel through the link given below, and also do join the Telegram channel for various number of modules as well as various number of notes that are available in free in our link in our channel. Okay, so that's all for today. Thank you and Jai Hind.